Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. First, we'll do recap of our previous topic. In our previous topic, we have discussed about the circle. A circle is a closed curve formed by a set of points on a plane. The distance from center to circumference is radius. The distance from one point of circumference to another point of circumference is called chord, and if the chord is passing from the center, this is called diameter. Diameter is double of radius, and radius is half of diameter. Now today we will learn about the line of symmetry. Learning outcomes. At the end of this class, we will able to draw line of symmetry in regular polygon and circle. First, we should understand what is symmetry. Symmetry is when something is the same on the both side. Means अगर हम किसी चीज़ को हाफ कर दें और वो बिल्कुल इक्वल सेम लिखती हो दूसरी साइड से भी हाफ करने के बाद, तो इट्स मीन दिस इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री. Today we will learn about the line of symmetry in the regular polygon. रेगुलर पॉलीगॉन्स क्या थे? जिनकी तमाम लाइंस सेम लेंथ की होती हैं और सारे एंगल्स बराबर होते हैं. रेगुलर पॉलीगॉन्स लाइक इफ वी हैव अ ट्रायंगल ऑफ सेम लेंथ, दिस इज अ रेगुलर पॉलीगॉन. दिस स्क्वायर इज अ regular polygon because the lines are same length and the angle is also same. In this situation, जितने भी कॉर्नर्स की फिगर होती है, जितने भी साइड्स की फिगर होती है, उसके उतने ही लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं. किस तरह? जैसे अगर ये 3 साइडेड फिगर है तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 3 होंगे. ये 4 साइडेड फिगर है तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 4 होंगे. ये 5 साइडेड फिगर है तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 5 होंगे. इसी तरह 9 साइडेड फिगर की लाइन ऑफ सिमेट्री 9 और 10 साइडेड फिगर की लाइन ऑफ सिमेट्री 10 होगी. बट एज वी नो दिस सर्किल जो है वो क्या नहीं है, पॉलीगॉन नहीं है, बिकॉज इसमें कर्व शेप होती है. तो सर्किल हैज़ इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री. सर्किल हैज़ इनफाइनाइट लाइन्स ऑफ सिमेट्री, यानी कि इसकी बहुत हर जगह से लाइन ऑफ सिमेट्री जो होती हैं वो बिल्कुल इक्वली जैसी होती हैं. नहीं, अगर हम इसको आधा करेंगे तो वो हर जगह से सेम हाफ बनाएगा. तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक वीडियो शो करती हूँ. इसको गौर से देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये क्या बता रही हैं. We're going to talk about symmetrical shapes. We'll start with this shape, one of my favorites, the circle. If we fold it in half, what do you notice? This half and this half are the same. That's because circles are symmetrical. Let's think of some other symmetrical shapes like squares, triangles, and even this star. We fold these shapes across a line and we call this a line of symmetry. For example, in this rectangle, we have how many lines of symmetry? Let's take a look. 1 fold, 2 folds, and nope, that doesn't look symmetrical. So this rectangle only has 2 lines of symmetry. How about this square? How many lines of symmetry can you find? Remember, you can fold on the diagonal. That's right, 4 lines of symmetry, as you can see here. How about this trapezoid? How many lines of symmetry does it have? Yes, just 1. And how about this rhombus? Very good. Let's try one more. How about this circle? There are an infinite number of lines of symmetry in a circle. Pretty cool, huh? I think you've got the hang of it. Great job. एक और वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ, उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी. And the number of lines of symmetry. So in a pentagon we have 1,
2, 3, 4, 5 sides. In a hexagon, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6 sides. And in an octagon, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sides, all the same length. Now, let's begin looking at the lines of symmetry. So in a pentagon, we can fold it right down the half. There's one line of symmetry. अब देखिए इसमें ये बता रहे हैं कि हमारे पास पेंटागन में कितने साइड्स हैं, 5 साइड्स हैं, और 5 साइड्स की लेंथ सबकी बराबर है और एंगल्स भी सबके बराबर हैं। तो जब लेंथ्स और एंगल्स सबके बराबर होते हैं तो जितने साइडेड फिगर होती है उसके उतने ही लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं। अब ज़रा इसको गौर से देखिएगा कि किस तरह वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। Now, because the sides and the angles are the same, you see how this goes from this vertex to the center of that line right there? We can do that to every vertex and to the opposite side through the middle. So it has 1, 2, 3, 4, 5 lines of symmetry. For a hexagon, we can see that we can cut this hexagon, or also do the same thing. We could go from vertex to vertex. We can go 1, 2, 3. So there's 3 lines of symmetry. But what about if we just folded it right down the middle in between side to side? So that would be 4, 5, 6 lines of symmetry. So 6 sides, 6 lines of symmetry. Now, what do you think? How many do you think would be in a regular octagon? Well, if there's 8 sides, let's see if there's 8 lines of symmetry. 1, 2, 3, 4, and then 5, 6, 7, 8. So, in a regular polygon, if you want to know the number of lines of symmetry, you just need to know the number of sides. आपकी समझ में आया जी कि अगर आप बात कर रहे होते हैं रेगुलर पॉलीगॉन की, तो जितनी भी साइड्स होते हैं उसके उतने ही उसके लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं। अगर ये ट्रायंगल है और इसकी तमाम लेंथ इक्वल लेंथ की है तो इट्स मीन इनकी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, 3 होंगी। अगर 6 साइडेड फिगर है और इसकी सबकी लेंथ इक्वल है, यानी कि ये रेगुलर पॉलीगॉन है अगर, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी, 6 होंगी। तो अगर हम आपसे किसी भी रेगुलर शेप का, किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का लाइन ऑफ सिमेट्री पूछते हैं तो आप जितने उसकी कॉर्नर्स होते हैं, जितने उसकी साइज होते हैं, उतने आप बता सकते हैं कि दिस इज़ द लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, होप आपकी समझ में आया होगा। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा, यू कैन डू मच बेटर। हाफिज़।